Hi friends, welcome on Europedia, and there's another good news and the best news for electrical and mechanical engineers. Lot of seats for all of you. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की दोबारा बहुत ज़्यादा सीट्स हैं प्लस मेटलर्जी इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 2023 के बारे में आपको बताता हूं कि लास्ट ईयर उनको जब डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिले तो उन्होंने 90 सीट्स के बैकलॉग के लिए अपना एग्जाम भी कंडक्ट किया। तो सेल अगर डिजर्विंग कैंडिडेट ना हो तो सेल बुलाता नहीं है और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही बुलाता है। अब इससे मीनिंग क्या है मेरा कि इन्होंने वैसे तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लेयर किया है और 1:12 की रेशो में ये लोग बुलाते भी हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए बाद में। बट एक फॉर्मूला आपको दूंगा एंड यू शुड अप्लाई इन सेल, क्योंकि 700 रुपये का फॉर्म है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आई विल टेल यू व्हाट इज़ अ फॉर्मूला एज पर अस अप टू व्हाट रैंक यू शुड अप्लाई। So if I give you idea about this, like mechanical 69 seats, let's say there are 30 general seats in mechanical, or for that matter any other branches. Let's say mechanical mein general unreserved 30 seats are there. You multiply it with the 12 and multiply it by 2 again. So that means this is 360 into 2, so approximately 700 rank tak. If your rank is up to 700, you can apply. That can be up to some level. So SAIL is only going to call candidates with high ranks. SAIL does not call candidates with low rank. So whatever category mein, whatever number of seats your category has, multiply that with 12, because 12 times they are going to call, and double it. Up to that rank you can expect the call. It may not even come, maybe they will call only 600 rank, that I'm not sure, but yes, the probability, if you can ask me, roughly stands somewhere around 700. That is for general. And for SC ST, obviously you can increase it even more. Maybe you can multiply it with 3. So it can, for SC ST and physically handicapped category, it can be more. OBC little bit more than general, and EWS and OBC little more than general. So maybe you can multiply it with 14 or 15. So that is how you have to understand and decide whether you can get a call or not. So this is for Steel Authority of India Limited, and then there is a second stage, that is interview, group task, case studies, elaborate process is there for SAIL. But still I think those of you who fall in this particular range of all India rank, they should apply in this. And SAIL is a very good public sector Maharatna company, and you should explore more options. Lot of seats coming this year. I think there is a common trend which we are seeing in HPCL also, in other and NALCO also, common trend that more number of candidates are being called for the interview, number of seats are more. The same trend continues. So mechanical electrical students, they should be motivated, and they should apply in more and more PSU, prepare really well. And the best platform to prepare is Europedia, and group task, group discussion, case studies आपको सब तैयार करना है, उसको टाइम लगता है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करो, बिकॉज पूरा साल बहुत से इंटरव्यूज आएंगे, एंड यू टेक एनुअल मॉड्यूल ऑफ यूरोपीडिया एंड गेट कनेक्टेड विद अस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज डोमेन्स. ऑल द वेरी बेस्ट. लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू फ्रेंड्स. थैंक यू.